Hello everyone, we are discussing laws of motion. Now those of you who have seen the lecture on Sunday, write down yes in the comment box. Sunday's lecture, if you have seen it completely, then write down yes in the comment box. Now let's see application of second law. You all have seen first, second and third law, and now we'll focus on the second law because this is something which is the important part. Mostly everything which they ask in laws of motion is based on second law. This is F. You have an object of mass m. It is moving in this direction with an acceleration a. We write F equals to m into a. Force vector, mass, acceleration vector, and everybody knows that F equals to ma is valid as long as mass is constant. When mass is not constant, what happens? We'll see it later. So, the way this thing is used is, suppose we have been given an object of 2 kg. And a force of 5 newtons is acting like this. Let's call it F1. I'm not using vector sign because I have only shown the magnitude. Direction is clear with the help of this arrow. Another force is acting in this direction. This is F2. And this F2 is 3 newtons. Again, I am showing you the magnitude. You can look at the direction part. F1 plus F2 is equal to mass into acceleration. First option. And this 2 kg, I guess it's clear that it's going to move in this direction. This is 5 and this is 2, and therefore it will move in this direction. Which option is correct? You need to answer this in the comment box. Out of these 4 options, which ones are correct for this figure? Write down this in the comment box. And remember, more than one option might be correct.
Look, if you write F1 plus F2 without arrows, they are what? Magnitudes. If these are magnitudes, then you are saying 5 plus 3. And straight away from this, it becomes clear that it is wrong. Everybody can see that 5 is being opposed by 3, whereas this is what? 5 plus 3, giving us 8, which means this first option is not correct. Second one says F1, it's 5 minus F2, which is 3, is 2a, and this gives us a as 1. And everything is correct. Net force is what? 5 minus 3. 2. 2 divided by 2 is giving us 1. Second option is correct. Third tells us this. F1 is 5 I cap. Especially look at this thing. F1, its magnitude is 5 and direction is what? I cap. Plus F2. F2 is 3 and direction is what? Minus I cap. Minus of 3 I cap. 3 is the magnitude and minus I cap is direction, which is 2a. 2a. This gives you what? A as 5 minus 3. This plus minus will become what? Minus. 5 minus 3 is what? 2. 2 upon 2, 1 I cap. So your acceleration is coming what? 1, which is the magnitude. I cap, that gives you direction. That means this third option is correct. Fourth one, F1 minus F2. I hope you can see it becomes 5i minus F2. This minus you have already used, but F2 is still what? Pointing left, and therefore is minus of 3i cap. 2a, and you can see that this minus will become what? Plus, giving us magnitude 8. 5 minus plus 8. But you know acceleration is not 8, and therefore fourth option is not correct. So this is something which has nothing to do with laws of motion. This is something which we have already done in vectors. If you have a vector system and you are dealing with magnitudes along a straight line, if magnitudes are along the different directions, then you know root a square plus b square plus 2ab cos theta. But in this case, it's very much clear, 5 minus 2. You simply do not add the magnitudes. If two vectors are acting in the opposite direction along a straight line like this, then you can directly subtract them. But whatever be the direction sense of these vectors are, this, or any other, total force is always F1 plus F2. Regardless of their directions, total is always F1 plus F2. And therefore, third is always correct. Third, listen again, is always correct. Second is correct only if they are acting in the opposite directions. Write down this as a statement also.
third is always correct. Third, option third is always correct regardless of direction of vectors. Whereas second is correct only when vectors are acting in the opposite directions. Now, this vector form is always useful, but if you only have one dimensional sense, things are acting along the same line, then instead of writing all the vector sense, we must always go for the easier version. Add all the magnitudes which are in the same direction and those which are in the opposite direction, subtract them, and you will get your total acceleration. That means try to answer this question. There is an object of 5 kg, a force of 12 newtons is acting in this direction, a force of 3 newtons is acting in this direction, a force of 11 newtons is acting in this direction. Let's answer this one first. Find out its acceleration, magnitude and direction both. Give me the magnitude, direction like east or west or I cap or minus I cap, in that way. And this is something which is nobody is going to ask you because it's very elementary. But just for practice, I'm asking you this. This 12 and this 11. At times people think that 12 and 11, they are acting on the opposite faces and therefore they subtract 12 and 11. But use some logic, you can see that 12 is pushing, 11 is pulling. They both are in the same direction. This is 12, this is 11, this is 3. Logic says dominating force is acting due east and therefore this body is going to move like this. So what is net force?
Instead of writing vector form or anything like that, simply say what? 12 plus 11. They are supporting each other. And these two are being opposed by 3. Minus of 3. Mass 5. Acceleration A. There is no need for you to use any vector sign. You can see that you have already found the direction. This. So, the forces which are acting in the same direction, 12 plus 11, they are being opposed by 3. This gives us 23 minus 3, 20 divided by 5, and your A is coming 4. So, in terms of vector, your answer is what? 4 I cap meters per second square, or 4 east. Now, the thing which I want to explain in this is something like, look at this figure, the same figure. In terms of vectors, we will write, say this is F1, this is F2, this is F3. F1, F2, F3. Now, try to focus on this part. F1, F2, F3, there are 3 forces. If somebody asks you to handle the whole thing vectorially, you don't have to worry about their directions as of now. You don't have to worry about this minus sign as of now. Simply write F1 plus F2 plus F3. Vector sum is always written in this form, is equal to mass into acceleration. And then do what? F1, look at the arrowhead, 12 I cap. F2, 3, look at the arrowhead, minus I cap. F3, 11, look at the arrowhead, I cap, 11 I cap. Mass 5, acceleration A. Do not use any I cap or J cap or anything with A. Leave it like this. Whatever its direction is will come out with the help of this line. So this becomes what? 12 minus 3, 9, plus 11, 20, divide by 5. So your A is coming 20 I cap divided by 5, and it becomes 4 I cap. This vector form directly gives you magnitude as well as direction. Note down this fast, and then we'll take another question with the help of same figure. You will draw a separate figure and I will do everything in the same figure, just so that you can see the difference and the easiness of the vector approach. Note down this fast. Now, you will draw a separate figure and then you will answer things in the comment box. If I say that instead of 3, this is 33.
in a separate figure, keep everything same, make it what? 33. Then find out magnitude and direction of acceleration. Everything is same. We have only changed the magnitude of F2, which is 33. Find the magnitude and direction of acceleration. So the logic says what? Look here. You can see that this is 12 and this is 11 and this is 33. Somebody using magnitude version, if they, for the one dimensional part, even if you write like this, then you can take care of the whole thing. This minus 3 is now minus 33. So if things are being developed for one dimensional part and you did what? You thought that acceleration is this. Then you will take 12 and 11 like this, plus 12 and plus 11. Listen again. Although everybody can see that 33 is the dominating force, it's more than the sum of 12 and 11, you can see it. But suppose somehow you thought that block is going to move in this direction. If you thought that it's going to move in this direction, तब आप क्या करोगे? इस 12 और इस 11 को पॉजिटिव लेना. क्यों? क्योंकि आपने एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में इन दोनों फोर्सेस को लिया हुआ है. Keep this 33, since it's in the opposite direction, take it what? Minus. I hope you can see the negative sign. Once you do this, your acceleration is automatically coming what? Minus of, this is 12 plus 11, 23. 23 minus 33 is what? Minus of 10 divided by 5, which is coming minus of 2 meters per second square. Now listen, what happens here? You thought that body is going to move in this direction, but even this approach is telling you that your acceleration, since is coming negative, you must not take your acceleration in this, instead in this direction. So this is the first part. आपको मैथ्स ने बता दिया कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो 2 है और इसकी डायरेक्शन क्या है जो आपने सोच रखी थी उसके ऑपोजिट. So this trick is valid as long as you are dealing along a straight line. If all the vectors are pointing along the same line, then you can always use this. But since
we know that the object is under these forces 12, 33 and 11, then logic says that it's going to move in this direction. Now, once you have taken your acceleration in this direction, let me call it A dash, just so that we can differentiate between this A and this A. So suppose another person takes acceleration in this direction, then for magnitude version, he must write 33 minus 12 minus 11, mass is 5 kg, 5 times A dash. Since you have taken your acceleration A dash in this direction, तो अब आप क्या करोगे? अगर आप केवल मैग्नीट्यूड वर्जन के पास जा रहे हो तो आपने क्या बोला कि भाई डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है, ज्यादा कौन है? 33. तो फिर 33 के डायरेक्शन में आपने पहले से ही एक्सेलरेशन ले लिया, कीप इट पॉजिटिव. बाकी जो अपोज कर रहे हैं उनको आप क्या लोगे? नेगेटिव. दिस वे व्हेन यू सॉल्व इट, योर A dash is coming 2, and you already know that direction is what? West. Tell me first, do you understand this plus minus part? Yes or no? Write down fast in the comment box. Do you understand the difference between this minus 2 and this plus 2? And when I say difference, मतलब ये कि दोनों ही चीजें सेम हैं. इस A का मतलब था राइट, तो आपसे बोला गया राइट में जाना है, राइट साइड जाना है. कितना? -2. इसका मतलब आपको कहां जाना था? लेफ्ट. नाउ एज फार एज वेक्टर्स आर कंसर्न, इनको मतलब नहीं कि कहां जा रहा है, किधर जाना है. एवरीथिंग विल बी गिवन with proper magnitude and direction, whatever be the directions are. They are one dimensional, two dimensional or three dimensional. You don't have to worry about these things. F1 plus F2 plus F3 is always what? MA. Any number of forces or vectors, total vector sum is this. Now, जैसे आपने देखा कि भाई हमारा F2 कितना है? 33. किधर? लेफ्ट. आपने क्या किया? आपने यहां पर -33, जो -3 था उसको क्या बना दिया? -33. This is -33. This becomes -20. This becomes minus of 4. This is not -20. This is -10 now. When you solve this, तो आपको क्या दिखा कि ये अपना 5A is coming minus of 10 I cap. That means जो हमारा A है वो क्या आ गया? minus of 2 I cap. आपको यहां देखना ही नहीं है कि बॉडी कहां जा रही है. आपने क्या देखना था? फोर्स 12 I cap, 33 minus I, 11 I. सारे के सारे फोर्सेस को प्रॉपर डायरेक्शन में लो. जो भी एक्सेलरेशन होगा वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर साइन के साथ आएगा. जैसे आपने देखा कि हमारा एक्सेलरेशन आया है -2 I कैप. इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड कितना है? 2, और डायरेक्शन क्या है उसकी? -I. व्हाट इज -I? वेस्ट. सो this all three are what? Same. थोड़े से प्लस माइनस के जो वर्जन्स हैं वो आपको कंफर्टेबली फील करने हैं. कैसे कंफर्टेबली फील करने हैं? सारी चीजें सेम कैसे बनाए से? दे आर सेम. इसका मतलब आप अपने दिमाग में क्या रख सकते हो? जो भी राइट साइड चीज है उसे पॉजिटिव लेंगे, राइट साइड चीजों को पॉजिटिव लेंगे, राइट साइड चीजों को. जो भी लेफ्ट है
उसको नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी लेफ्ट वाली चीजें हैं उनको पॉजिटिव लेंगे। तो अगर आप लेफ्ट को पॉजिटिव लोगे तो राइट वाला ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नेगेटिव। लेफ्ट को पॉजिटिव लेंगे, 33 को पॉजिटिव लिया तो फिर राइट राइट नेगेटिव बनेंगे। लेफ्ट को पॉजिटिव लिया, ए डैश। इट्स अबाउट द डायरेक्शनल सेंस कि किसी ने बोला कि मैं आपको पॉजिटिव लूंगा, ठीक है, आप पॉजिटिव लोगे तो फिर डाउन क्या होगा? नेगेटिव। एक दूसरे आदमी ने बोला नहीं मैं डाउन को पॉजिटिव लूंगा तो फिर उसके लिए अब क्या बन जाएगा? नेगेटिव। नोट डाउन दिस, ऑल थ्री वर्जन्स। Look at this new profile. And leave one extra line before this question because I will give you a heading for this thing. But before I introduce the heading, look at the question. ये सारा का सारा पार्ट अपना सेकेंड लॉ की प्रैक्टिस चल रहा है। There are two blocks of 3 kg and 2 kg placed side by side on a frictionless surface. There is no friction as long as it's not given. We will not consider any friction. Friction in all the questions will be taken what? 0. So 3 kg and 2 kg are lying on a frictionless horizontal surface and this whole thing is being pushed in this direction with a force of 50 newtons. A force of 50 newtons is acting on 3 and 2. Now first, let me see what is your understanding level. Let me ask you an elementary question first. इन दोनों 3 kg और 2 kg में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? 3 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या 2 kg का? What do you think? Write down in the comment box fast. Before I even start the question, let me ask you this easy part. Which one is moving with greater acceleration, 3 kg or 2 kg? Mention this in the comment box. Good.
कई बार लोगों को लगता है कि भाई 3 kg पर फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो वो आंसर क्या देते हैं कि 3 ज्यादा तेजी से मूव करेगा. बट you all have answered correctly that they both are moving with same acceleration a, which is quite logical. If you are pushing 3 and 2, और सपोज किसी ने ये बोला होता कि भैया 3 का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो अगर 3 का एक्सेलरेशन ज्यादा होता तो वो 2 को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता. That's not happening. किसी ने अगर ये बोला होता कि सर 2 kg का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तब क्या होता? 3 kg एंड 2 kg, 2 का एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होता तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा फास्ट चलेगा, तो ये 2 आगे निकल जाता. आप फोर्स लगा रहे हैं 3 पर, 2 आगे निकलकर अपने आप दौड़ने में लगा हुआ है, समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. So everybody can feel it that they both are moving with same acceleration. Now question starts. Write down the question. Find out number 1. Accelerations of both blocks. Accelerations of both blocks. I'm saying accelerations because if they were moving with different acceleration, then you would answer 2 sets. But now you already know that they are moving with same acceleration. Second part, net force. Find out net force on 3 kg and 2 kg blocks. Find out net force on 3 kg and 2 kg blocks. And third part, this is the important part. Find out force which is exerted by 3 kg on 2 kg. Find out force which is exerted by 3 kg on 2 kg. You're pushing 3. You're pushing 3. 3 in turn is pushing 2. So with what force 3 kg is pushing 2 kg? Let me see how many of you can answer these questions without my help. If you cannot, just don't worry. We'll understand everything, how to answer things like these. Last question is find out force which is acting on the force 3 kg is exerting on 2 kg.
Only 2-3 answers so far. Look, to answer questions like these, we'll use a technique which is called free body diagram. In short, we'll call it FBD, free body diagrams. What do you mean by free body diagrams? You will separate these figures, will free them from each other. They are still connected, but just for the sake of answering, हमने इनको अलग अलग ड्रॉ किया हुआ है. A force is coming from this side, which is 50. This is 3 kg, this is 2 kg, and logic tells us that they are moving in this direction with accelerations a. Now the important part, and the first line which you left before the question. Now with that line, in that line write down normal reaction force. You're trying to understand normal reaction force. This is the heading for the entire question. What is normal reaction? This 3 and this 2, they are touching each other. They are in contact of each other. And this is the contact surface. This, contact surface. हर कॉन्टैक्ट सरफेस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है. ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस है ग्राउंड के साथ, ये भी है, यहां भी लग रहा है, लेकिन अब हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है एज ऑफ नाउ. बाद में इसमें भी होंगे. अभी हमारा एम था कि व्हाट इज द फोर्स व्हिच 3 kg exerts on 2 kg. For this, first we will identify the contact surface. Now, normal reaction force is a pushing force. इस नॉर्मल रिएक्शन से आप चीजों को पुश करते हो. कुछ दिनों बाद एक टेंशन फोर्स आएगा जो रोप में होता है. दैट्स अ पुलिंग फोर्स. जब आएगा तब देखेंगे. नॉर्मल रिएक्शन इज अ पुशिंग फोर्स. कैसे पुश करता है वो भी फील कराऊंगा. अभी के लिए जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, द टर्म नॉर्मल मीन्स नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. जो अपनी कॉन्टैक्ट सरफेस है उससे 90 पर टुवर्ड्स द बॉडी एक फोर्स लगता है, एंड दिस फोर्स इज एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन. कुछ बुक्स में या हो सकता है आपके स्कूल में इसको आर से शो करें, रिएक्शन आर, बट विल टेक इट एज एन.
This N is the force which 3 kg exerts on 2 kg, and we can feel it once you draw free body diagrams. लग यही रहा है जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में हैं, लेकिन समझने के लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है. इस कांटेक्ट सरफेस पर एन लगा. नाउ मैंने आपसे अभी क्या बोला, एंड विल आल्सो राइट द स्टेटमेंट. कांटेक्ट सरफेस से 90 पर टुवर्ड्स द बॉडी एक क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन. तो बॉडी 3 भी है, बॉडी 2 भी है, ये भी एक फोर्स है. इट्स लेट्स कॉल इट एन डैश. इस 2 पर कितना फोर्स लगा? एन किसने लगाया? इस 3 kg ने. 3 इज पुशिंग 2. इस 2 ने इस 3 kg पर इस तरफ लगाया एन डैश. Now tell me in the comment box, what is the relation between magnitudes of n dash and n? Which one do you think is correct? I'm giving you magnitudes. N dash is n greater than or less than. Which option is correct? A, B or C? They are of same magnitude. एन डैश जो 2 लगाएगा 3 पर ये ज्यादा होगा आपके हिसाब से, या जो 3 2 पर लगाएगा वो ज्यादा होगा? व्हाट डू यू थिंक? गुड. द आंसर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ इज व्हाट? फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction, and therefore this n dash, its magnitude is also what? n. इसलिए आगे से अपन लोग क्या किया करेंगे, ये भी n दिखाएंगे और इसको भी n दिखाएंगे. क्यों है दोनों n? Because of Newton's third law. Note down this much and then we'll write a statement and then we'll complete the question. Put down everything. This is n dash. This is the equal sign. N dash equals to n. Don't get confused. Now write down a statement. Normal reaction force acts perpendicular to the contact surface, and its direction is always towards the body. And its direction is always towards the body. Because it is a pushing force. Look at these two markers. The black one is pushing. So when they come in contact,
black is pushing blue in this direction. Newton's third law says, in turn, blue is pushing black in the opposite direction. So the force which is acting between these two markers when they are in contact is trying to push them. It's not a pulling force. Pulling force is a different force, and we'll see it with the help of a rope later on. Normal reaction हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को पुश as long as they are in contact. क्योंकि अगर पुल करेगा, if it's a pulling force, you can see two bodies, they cannot pull each other if nothing is connected between two bodies. These two hands, they can easily push, but the moment I try to pull, there is nothing left. So either I have to have a rope which connect it, or I need to hold my finger like this, which acts as a rope. In that case, pulling action can take place, but for pushing action, they need to be in contact of each other, and then this hand is pushing this hand in this direction and this one in this direction. आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है that normal reaction, it acts perpendicular to the contact surface towards the body. Now, अब मैं यहाँ पर इस n dash को केवल n ले रहा हूँ because हमने चीजों को प्रूव कर दिया है. These things are called free body diagrams. एक बार आपने फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए, उसके बाद अभी तक हमने जो चीज की थी आज के इस लेक्चर में, we'll use that. कैसे? Look here. अगर आप इस 3 kg को देखोगे, let me draw these things here again. This is 50, this is N, this is A, the whole thing. Now, second law, we need to use it. What is second law? F equals to ma. For the first body, which force will be the larger force magnitude wise? 50 or N? What do you think? Write down in the comment box. If you think 50 will be the larger force for 3 kg, then write down 50. If you think N will be the larger force, then write down N in the comment box. And if you have no idea, then just don't write anything. Which one do you think will be of greater magnitude? Good. Simple logic. पूरे फिजिक्स में लॉजिक चलता है. अपने को पता है कि ये 3 और 2 हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इस 50 की वजह से कहाँ जाने वाले हैं, राइट साइड. तो अगर ये राइट साइड जा रहा है और कोई आदमी ये बोले कि भाई n 60 है, 60 या 70, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. भाई ये है 70, ये है 50, बॉडी कहाँ चली जाएगी? लेफ्ट. इसका मतलब अपने को पहले से पता है that F is greater than N. इसका फायदा हमने क्या उठाया? What is this F? When I use F in F equals to ma, remember it is total force. तो इस 3 पर total force क्या है? हमने लिखा F minus, let's take the values now. Let's not again and again write the same thing.
50 माइनस n, जो हम थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे। ये है 50, ये n है। अपने को पता है कि ये 50 ज्यादा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 50 माइनस n। 50 minus n is what? Mass into acceleration, 3a. This is for the first block. Now look at the second one. ये जो चीजें हमने ड्रॉ की हैं, क्या है ये? फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब सबसे काम का पार्ट, इस 2 kg पर केवल एक फोर्स लग रहा है, N। इस 2 kg को 50 से कोई मतलब नहीं है। Free body diagram, it tells us that this 2 is under only one force, which is what? N. It's like कि आपको पीछे से किसी ने पुश किया, उसको पीछे से किसी ने पुश किया, and this process goes on. आपसे पूछा जाए कि आपको किसने धक्का दिया, तो आप बोलोगे भाई जस्ट पीछे वाले आदमी ने। उसका सोर्स कहाँ है? You don't have to worry about that. The push which is coming from behind is what is coming from this 3 kg. Who is pushing 3? इस 2 को उससे कोई मतलब नहीं। That means जब 2 kg के लिए हम सेकेंड लॉ यूज करेंगे तो हम केवल क्या लिखने वाले हैं? फोर्स इज ओनली n, मास टू एक्सेलरेशन a. If you are comfortable with this equation and this equation completely, then write down yes in the comment box, because it is easy but very important thing. It teaches you the meaning of free body diagram. इस 2 पर 50 नहीं लग रहा है, इस 2 पर क्या लग रहा है? n. This is something which is very important. One of you is asking me to explain the whole thing again. भाई हमने क्या किया, हमारे पास एक there are different blocks we have like this. I hope you can see these things. Let me pull it, present it in this form. This remote and the charging unit. अब मैंने इस रिमोट से इस चार्जिंग यूनिट को पुश किया। जब मैं पुश करूंगा इस रिमोट को तो पक्का है कि भाई ये चार्जिंग यूनिट भी क्या करेगी? मूव। अगर आप इस चार्जिंग यूनिट से पूछते तो ये बोलती कि भाई फोर्स कहां से आ रहा है? इस रिमोट से। इसको मतलब ही नहीं है कि मैंने इस रिमोट को पुश किया। इसके लिए फोर्स इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट which takes place over here, and therefore when we write second law, what is second law? You need to find all the forces which are acting on mass n. Mass is what? 2. इस 2 पर कितने फोर्स लग रहे हैं? केवल एक, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब इस 3 से पूछते कि भाई तुझ पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ये बोलता 2 लग रहे हैं, 50 and n। क्या वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं? इसने बोला नहीं, दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमने पूछा अगर ऑपोजिट लग रहे हैं तो कौन सा ज्यादा है? 50। सब्ट्रैक्ट कर दो ज्यादा में से कम को, एंड यू गेट मास इनटू एक्सेलरेशन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजें क्लियर होगी। नाउ as far as question is concerned, it's done. You've got 2 equations. Add these 2 equations. Let's call it equation number 1
and let's call it equation number 2. So when you add these two equations, equation number 1 plus equation number 2, then you can see that n and n is gone. This is minus n, this is plus n. Simple calculation भाई, ये आ गया तुम्हारा 50 equals to 5a. 3a plus 2a is 5a, and this gives us a as 10 meters per second square. जैसे आपके पास a आया, आपने इस a की वैल्यू को यहां पुट कर दिया. ये मैंने ब्लू से इसलिए शो कर दिया है कि आपको दिखे कि ये कैलकुलेशन पार्ट चल रहा है. वी हैव डेवलप्ड दीज इक्वेशंस. नाउ वंस यू गॉट a, put it in this, it gives you n equals to 2 into a 10, which is 20 न्यूटन्स. अब अपना क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था इनके एक्सेलरेशंस पता करने थे. कितना आ गया? 10. लास्ट क्वेश्चन क्या था? What is the force which is acting on 2 kg coming from 3 kg? The force which 3 kg exerts on 2. The force which 3 kg exerts on 2 is what? N. What is N? 20. And then the second question था कि भाई अपने को पता करना था, मैं यहां दिखा दे रहा हूं, आप जहां भी दिखाएं, अपने को पता करना था कि इस 3 पर कितना नेट फोर्स है. केयरफुली देखना. So when I write F3, remember F3 का मतलब होगा total force which is acting on 3. तो हर आदमी को दिख रहा है कि इस F3 पर total force कितना है? 50 minus n. 50 इधर से n इधर से, n हमने कैलकुलेट किया है, is what? 20. तो ये अपने लिए क्या आ गया? 50 minus 20, which is what? 30. इस 2 पर कितना फोर्स है? जो 2 पर फोर्स है हमने उसको क्या नाम दे दिया? F2. तो 2 पर जो फोर्स है, अरे यार वो तो केवल कितना है? N. What is N? 20. So what is net force on 2? N. What is net force on 3? 50 minus N. But from now onwards, when they ask you what is force on a body, what is force on a body? Force on a body is what? Mass into acceleration. So when they ask you what is force on 3, instead of doing this, do this. Mass into acceleration. किस पर फोर्स पूछा है? 3 पर. ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? 3 into a. क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों का मतलब क्या है? सेम, बट टाइम सेव होता है. व्हाट इज 3a? a हमने निकाल दिया है, कितना है? 10. 3 into 10, this is coming what? 30. किसी ने पूछा भाई F2 कितना है? What is F2? Mass into acceleration. आप ध्यान रखना हम कहां से कहां जा रहे हैं. If you need the video lecture, you can also get it afterwards. What is force on 2? Mass into acceleration. Mass into acceleration is what? 10 is coming 20. Same thing. If you understand this question completely, then write down yes in the comment box and take your time, note down everything properly. If you have any doubt, switch on your mic or you can write your doubt in the comment box.
Now, look at this part again. आई होप ये सारी कैलकुलेशन आपने नोट कर ली होगी. जब आप, और इस चीज को केयरफुली सुनना, जब आपने 3 और 2 इन दोनों को अलग अलग ड्रॉ किया है, देखो भाई इधर, when you draw 3 kg and 2 kg like this separately, तो ये जो फोर्सेस हैं F N, we call them external forces. External forces. इस 2 पर जो n है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स. बट यहां देखना, अगर आपसे इस 3 और 2 को एक साथ ड्रॉ करने के लिए बोला जाता, पे अटेंशन, 3 and 2 अगर आपने इनको एक साथ ड्रॉ किया होता तो यहां से आ रहा है 50 एंड इस 3 पर इस तरफ से लगा था n. दिस n इज कमिंग फ्रॉम 2 और इस 2 पर इधर n लग रहा है इस तरफ. When you see action and reaction forces in a same figure, listen again. When you see action and reaction forces in the same figure, then they are called internal forces. And internal forces, they do not participate in acceleration. Why? Look here. If I ask you to write fourth equation, second law, तो आप क्या बोलते कि भाई ये 3 और 2 ये मिलकर किस एक्सेलरेशन से जा रहे हैं? A. यहां देखना, अगर आपसे बोला जाता कि भाई न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो, तो आप क्या करते? आप बोलते 50 इधर लगा, और कौन है जो इधर लगा है? n. तो आप लिखते 50 प्लस n. 50 और इस n को कौन अपोज कर रहा है? द अदर n, माइनस n. ये जो पूरी बॉडी है, अगर इसको एक साथ देख रहे हो, एक साथ, तो इस पूरी बॉडी का मास कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय a. n and n gone. 50 divided by 5 a, it gives you what? 10. इसका मतलब क्या? जब आप दोनों या तीनों या जितनी बॉडीज हैं उन सबको ग्रुप करके एक साथ देखते हो, तो जितने भी एक्शन रिएक्शन टाइप के फोर्सेस हैं which are called what? Internal, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल. And therefore from now onwards, instead of writing this for a setup like this, if we are interested only in acceleration, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बोलेंगे कि भाई ये जो फिगर है ना, ये फिगर हमारे लिए केवल ऐसा है, ये फिगर हमारे लिए केवल ऐसा है, as if we have a body of 5 kg
which is under a force of 50 and is moving with acceleration a. 5 नहीं है कौन 3 and 2. लेकिन अगर हम 3 और 2 को ग्रुप कर दें तो जो भी यहां हो रहा है वो ये है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. अल्टीमेटली जब कैंसिल ही करना है इन्होंने तो हमने बोला कि फिर इनको दिखाने का मतलब ही नहीं है. We'll take only this force which is the external giving us what A, and therefore I can straight away write 50 equals to 5A, which is A equals to 10. They all are same, लेकिन वो एक एक दो दो सेकंड का जो टाइम सेव करेंगे एंड जो सिंप्लिसिटी क्रिएट करेंगे ये हमारे लिए आगे के क्वेश्चंस में काम आएगी. सो व्हाट यू लर्न, जब हमारे पास इंटरनल फोर्सेस एक ही फिगर में दिखेंगे एक्शन रिएक्शन, तो फिर उनको काउंट करने का कोई मतलब नहीं. दिस एन इज नॉट एन इंटरनल फोर्स. अगर आपने 3 को देखा तो फिर आपने 2 को नहीं देखा, केवल आप किसकी बात कर रहे हैं 3. एक्शन एंड रिएक्शन दोनों एक साथ दिखते हैं. इस फिगर में केवल क्या दिख रहा है एन, therefore it is what, an external force. Just tell me briefly fast, do you understand the distinction between external and internal, yes or no, fast? It's very important. If you do not understand it, write down no. And do one thing, write a statement and we'll discuss this normal reaction part, internal, external, in the next class in detail. But before that, write down a statement. अगर किसी को कोई confusion होगा तो next class में पूरा खत्म हो जाएगा. But write down the statement. Let's call it figure 1. This is figure 1 and ये जो अपना सेटअप है इसको बोल दो figure 2. जब ये अलग अलग ड्रॉ किए हैं call them figure 2, साथ साथ है call it figure 1. Statement: in figure 1 both normal reaction forces are present in the form of internal forces. In figure 1 both normal reaction forces are present in the form of internal forces, and therefore they do not participate in the acceleration of 5 kg body. 3 plus 2. They do not participate in the acceleration of 5 kg body. Next line. But in figure 2, same normal reaction forces behave like external forces, and therefore they do participate in the accelerations of 3 kg and 2 kg. 3 kg and 2 kg. Listen again.
इस 3 के लिए 50 माइनस n लिखा था 3 इंटू ए, तो क्या 3 के लिए n का यूज है? पक्का है। इस 2 के लिए क्या लिखा था? n इक्वल्स टू 2a, क्या इस 2 के लिए n का रोल है? बिल्कुल है। क्या इस 5 के लिए है? नहीं है। 5 के लिए क्यों नहीं है? n माइनस n। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, when you group them together, when you see them together, they are called what? Internal forces. Write down this next line also. Last 1 minute class. Action and reaction forces. Action and reaction forces, when shown in the same figure. Action and reaction forces, when shown in the same figure, are called internal forces. अगर आपको कोई फोर्स ऐसा दिख रहा है कि वो दो पार्ट में प्रेजेंट है, एक्शन रिएक्शन, एक आगे एक पीछे, तो वो इंटरनल है। या नहीं, जब आप 3 को देख रहे हो तो अकेला दिख रहा है, जब आप 2 को देख रहे हो तो अकेला दिख रहा है। These are what? External forces. As an external force, they do participate in acceleration of 2 and 3. एक लास्ट लाइन से फील कर जाओगे। लास्ट लाइन से कैसे फील करोगे? If you can see, if I start pushing myself like this, आप अपने घर में खुद करके देख लेना कि आपने अपने आप को ऐसे पुश किया। आप एक साइकिल पर या व्हील्स पर खड़े हैं, if you start pushing yourself like this, क्या आप अपनी पूरी बॉडी को आगे ले जा सकते हो? पॉसिबल नहीं है। कि आप पुश कर रहे हो आप ऐसे और आप आगे चले गए, दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? एक्शन आपकी बॉडी पर आगे, रिएक्शन आप ही की बॉडी के पार्ट पर पीछे। एज अ होल दिस प्रोसेस इज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग। दिस एंड दिस दे आर पार्ट ऑफ वन सिस्टम। लेकिन अगर आप केवल इंडिविजुअल पार्ट्स को देखो तो फिर एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, आगे भी जा सकता है, बाद में देखेंगे कभी इसको। द पॉइंट इज कि इन दैट केस हमारे लिए अलग अलग जब देख रहे हो तो फिर ये भी आगे जाएगा। कौन लेकर गया इसको आगे? इसका फोर्स। कौन लेकर गया इसको पीछे? इसका फोर्स। लेकिन अगर दोनों एक साथ देखोगे then thing is not moving इस सेटअप में, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पर और बाहर से कोई आदमी मुझे पुश नहीं कर रहा है। You'll understand everything further in detail जब अपन इस तरह के एग्जाम्पल्स को लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपफुली समझ में आएगा, जा सकते हैं।